A very fantastic morning to one and all present over here. Respected chief guest, principal madam, supervisor madam, teachers and all my dear friends. Today I am Mohammad Sufyan Patel from Standard 8D and myself Tehzeeb Sheikh from 9th B has given an opportunity to do anchoring on this auspicious occasion. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our country became an independent republic country. You all are aware that India got its independence on 15 August 1947 and the country did not have its constitution. Instead, India was governed by the laws implemented by the Britishers. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. Bhim Rao Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution, which was adopted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January. On the same day, Dr. Rajendra Prasad began the term as the new President of India and the Constituent Assembly became the Parliament of India under the provisions of new Constitution. When we let go and let God, we have the key to glorious living. And what is far more important? The key to an eternity with God. A program is incomplete without the blessings of Almighty God. So I request everyone to please stand up for the prayer and I request our prayer girls to please come forward. Prayer begins. तुम प्रियदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे कोई ना जाने तुम्हारा अंत ऊंचे से ऊंचा भगवन सबल समगरी तुम्हारे सुंदर दारी तुम दे होए सुआज्ञाकारी तुम्हारी गत में तुम्हारी जानी नानक दास सदा कुर्बानी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ना झुकाकर हमारी शहादत पर है तिरंगे, ना झुकाकर हमारी शहादत पर है तिरंगे, कि तुझे लहराने कहीं फिर से ना जी उठे हम, कि तुझे लहराने कहीं फिर से ना जी उठे हम। लिपट कर सोए हैं तुझसे बड़े सुकून से, लिपट कर सोए हैं तुझसे बड़े सुकून से, कि सदियों याद करेंगे मानो अमृत पी चुके हम, कि सदियों याद करेंगे मानो अमृत पी चुके हम। So, our next program is the hoisting of our national flag. So, I request everyone to please stand up for the national anthem and I request our chief guest to hoist the flag and I request all the dignitaries on the dais to join them. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The next program, that is flag song. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसा
तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, रहे हमारा, रहे हमारा। हजारों बच्चों को हजारों बार, हजारों बच्चों को हजारों बार पढ़ाकर कराते हैं कदम पार, पढ़ाकर कराते हैं कदम पार, हर परिस्थिति से निकालते, हर परिस्थिति से निकालते, चाहे हो जीत या चाहे हो हार, चाहे हो जीत या चाहे हो हार। Now I hand over the mic to Ganesh sir. आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, सदा अपने दिल में बसाए रखना, सदा अपने दिल में बसाए रखना। A very pleasant and cool morning to one and all present over here. Today's chief guest, Honorable President Sir of Shri Guru Singh Sabha, respected dignitaries on the dais, Principal Ma'am, Supervisor Ma'am, Primary in charge, PTA members, teaching and non-teaching staff, and my lovely children. I welcome each and everyone on this occasion of auspicious day, 26th January, which is celebrated as a Republic Day. Today, we are celebrating 73rd Republic Day, so I wish everyone a very happy Republic Day. It's 26th January today, the historical day to remember our national heroes and freedom fighters who suffered to give us a republic nation. Let us make a promise that we would not let the hard sacrifices of our brave freedom fighters go in vain. We would work hard to make our country the best in the world. Really, we all are proud to be the citizens of India. Not only Indians living in India, but Indians living in every corner of the world celebrate this great day with enthusiasm. So, to celebrate this auspicious day, today we have with us our chief guest, Honorable President Sir of Shri Guru Singh Sabha, Sardar Harbir Singh Ji here. I request our Principal Ma'am, Ms. Baljeet Kaur, to welcome our today's chief guest with a bouquet, shawl and a coconut as a token of respect. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request our secondary supervisor, Mrs. Archana Tiwari, to welcome Sardar Jaspal Singh Ji Saini, Vice President of Shri Guru Singh Sabha, with a flower as a token of respect. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request Primary in charge, Mrs. Veena Nair, to please come forward and welcome Sardar Lembar Singh Ji with a flower as a token of respect. I'm very pleased to have
respected member of Sri Guru Singh Sabha, Sardar Jagdeep Singh Ji Plaha, Joint Secretary of Sri Guru Singh Sabha with us. So I request once again our principal ma'am to please welcome sir with a flower as a token of respect. I, on behalf of Guru Nanak English High School, once again welcome all the dignitaries on the dais on this occasion of 73rd Republic Day. Freedom in mind, faith in our heart, memories in our souls. Let's salute the nation on Republic Day. So once again, I wish everyone a very happy Republic Day. Thank you. Now I hand over the mic to Tezi. गुरु तेरी महिमा का वर्णन कैसे करे? गुरु तेरी महिमा का वर्णन कैसे करे? वर्णन लिखूं तो कागज छोटा होए, वर्णन लिखूं तो कागज छोटा होए. So now I call our sweet, humble, energetic teacher, our supervisor madam, to say a welcome speech on this occasion. Good morning, everyone. Respected Mr. President Sir, dignified management members, our principal madam, primary in charge, my dear colleagues and parents, students. Greetings to all of you on the eve of 73rd Republic Day of the world's largest and most vibrant democracy. In this land of ours, enriched with diversity, with many festivals, our national festivals are the festival which is celebrated by everyone with great patriotic fervor. We celebrate Republic Day with tremendous enthusiasm and express our respect for the national flag and our faith in the Constitution. 72 years ago, on this day, that is 26th Jan 1950, we, the people of India, adopted, enacted and gave ourselves a unique constitution. Values like justice, liberty, equality, fraternity outlined in preamble of our constitution are sacred to all of us. Its abiding adherence is meant for each and every Indian. Republic Day also reminds us about our freedom struggle and how the great freedom fighters of our country sacrificed their life to get us Purna Swaraj. Let's not forget the main attraction of this day. It is none other but Republic Day parade at our capital. Our president hoists flag at Rajpath and ceremonious parade which showcase India's defense. Our cultural and social heritage is being witnessed by entire world. It is on this day every year President distribute Padma Award to the civilian of India, which is the second highest civilian award, next to Bharat Ratna. This year also, 128 award is given to the civilian. I also want to share that this year, Cyrus Poonawalla of Serum Institute of India, which has manufactured Covishield vaccine, Mr. Krishna Ella and Mrs. Suchitra Ella, both are the owner of Bharat Biotech, which was able to manufacture Covaxin, which is indigenous vaccine. They both are being awarded as Padma Bhushan Award this year. Last 2 years of India was very tough. It was tough due to pandemic. Yet, despite of serious calamities, India has succeeded
in taking forward activities in many spheres. The adversities of the last 2 years have only reminded us that care, concern for humanity and the feeling of fraternity is what is keeping us Indians together in millennia. India has always marched ahead, helping its fellow human on this heavenly abode. We have excelled tremendously nearly in all spheres. It can be due to our unity, due to our way how we have dealt disaster management in this pandemic, or due to invention of vaccine, or by being world leading pharmacy. Today, we have successfully started vaccination campaign for kids, wherein 4.5 crore of Indian kids are already vaccinated. Even booster dose is been given to frontline worker and senior citizen. We are moving ahead towards normalcy. Still, we have to move and improve lives of many fellow citizens and also modernize and strengthen our nation by moving ahead to self-reliant India. This year is unique. India will be crossing a milestone. It is about to complete 75 years of independence, and we are going to celebrate this year as Azadi Ka Amrit Mahotsav. The slogan is prominent and known to every Indian. It is Ek Bharat, Shresth Bharat. So let us work together and make our India indeed Shresth, not in words, truly Shresth in this entire world. Now, coming to my work and duty, today we have gathered here to celebrate this special occasion of Republic Day. And we are having with us, gracing our program, our President, Sir of Shri Guru Singh Sabha, Sardar Harbir Singh Hayat. Sir has always helped in progress of school by creating a vision, articulating a vision, and passionately owning the vision. He then relentlessly drive it to completion. Such a person is our President, Sir, with extraordinary determination. On behalf of our staff, I extend my warm welcome to Sir for gracing this occasion. Welcome, Sir. I also extend my heartiest welcome to all the dignitaries on the dais for unlighting this occasion. Welcome. A leader is one who knows the way, gives the way, and shows the way. Integrity, insight, and inclusiveness are the three essential qualities of leadership. And we are blessed to have two such prominent personalities on the dais. They are none other but our Principal Madam, Mrs. Baljeet Kaur, and Primary In Charge, Mrs. Deena Nair. I take this opportunity to extend a warm and happy welcome to both madam. Welcome, ma'am. The strength of the team is each and every individual member, and the strength of each member is the team. Great things are done by the team of the people. We, the staff of Guru Nanak English High School, is not a team only because we work together. We are a team because we respect, we trust, we care for each other. I take this opportunity to welcome my staff, my work family, teaching and non-teaching inclusive. Welcome, welcome everyone. Parents and students are inseparable part of our school. So,
a bright and happy welcome to all the students and the parents, those who are witnessing this program. Welcome one and all. And before I end my speech, I want to share a few lines of a great poet, Mr. Prasun Joshi. He is a great lyrics writer also. A very touching patriotic line by Mr. Prasun Joshi. The line goes in this way. देश से प्यार है तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पर छेड़ो झनझनाओ बार बार, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले, भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, है मुझे सौगंध भारत, भूलूंगा ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर एक बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूंगा एक क्षण तुझे, रक्त की एक बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। A warm welcome to everyone and on behalf of staff, a happy Republic Day to everyone. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for your enriching words. अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, कभी प्यार से कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते, जीवन जीना हमें सिखाते। We will remember her till we are old. We will remember her till we are old, because she is not less than a gem or gold, because she is not less than a gem or gold. So now I call upon our dynamic personality, our principal ma'am, to say a few words on this occasion. Good morning, dignitaries on the dais, our chief guest, President of Shri Guru Singh Sabha, Sardar Harbir Singh Ji Hayar, management members, secondary supervisor and primary in charge, my dear staff members, PTA members and all my dear students sitting at home. Actually, I want to wish you all a warm morning. So let us spread warmth because we all are feeling cold. So once again, greetings to all of you on the eve of 73rd Republic Day of the world's largest and most vibrant democracy. In this land of ours, enriched by diversity with many festivals, we celebrate Republic Day with enthusiasm and express our respect for the national flag and our faith in the Constitution. This day has come to mean a lot to all Indians living within the country and abroad. 72 years ago on this day, we, the people of India, adopted, enacted and gave to ourselves a unique constitution. For all of us, then, this is a day to also pause and ponder over the core values that the Constitution propounds. These values, justice, liberty, equality and fraternity, outlined in the preamble of our Constitution, are sacred to all of us. Its abiding adherence is meant
not only for those who are mandated to govern, but for the people at large. It is not without reason that the wise men and the women who framed the Constitution chose to place these 4 terms at the very beginning of the Constitution to build the foundation on which the edifice of our democracy rests. In fact, these were the values that guided our freedom struggle. A galaxy of great leaders and the thinkers like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose inspired our freedom struggle. They had diverse dreams of magnificent future of the motherland, but common to their aspirations were these values: justice, liberty, equality and fraternity. Our Constitution has given us few responsibilities and few rights too. As our rights and duties come together, so we are expected to fulfill the duties as a citizen first before claiming our rights. Like you all have the right, this is for my dear students, as you all are having the right to get educated, but you also carry the responsibility to be an obedient student. Dear students, our forefathers have faced the atrocities of Britishers, but at last emerged as winners. Dear students, we all have faced COVID-19 and emerged as winners with the help of our teachers, our parents and our other people, those who are around us in the society. Despite the serious calamity, we have succeeded in taking forward our activities in school. The pandemic threatened to derail the young generation's learning process, but our teachers quickly adopted new technology and ensured that there was no break in education. I salute all the teachers for their efforts in keeping students connected to the school, though at home. I salute the scientists who helped self-reliant India to manufacture its own vaccine for COVID-19. I salute all the doctors and the health workers who helped in undertaking a mass vaccination drive, which is the largest exercise of its kind in history. I urge upon all my dear 15 to 18 years students. Here I am taking this platform because I know that my students are watching me. So I like to take this opportunity. I urge upon all my dear 15 to 18 year students to use this lifeline and get vaccinated as per the guidelines, because your health opens the way for your advancement. I salute all the farmers who worked in their fields throughout lockdown and provided food to whole of India. Adversity often plays the role of a great teacher. It makes us stronger and more confident. With that confidence, let us see a dream at this Republic Day. One nation, one vision and one identity. We all have suffered a lot in this calamity. So now let us all learn a lesson. We have to stand united. So let us all stand as a united force against all the negative forces that are working to divide us. A poet has rightly said, ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। Today is the best day when we should take an oath
to preserve our country's real meaning, position, status, and most importantly, culture of humanity. And must remember the sacrifices of our freedom fighters so that we can value the freedom which we got just because of their sacrifices. Before I conclude my speech, I would like to say, patriotism is just like charity, it must begin at home. So let us show our patriotism towards our nation, let us show our love for our mother nation. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Principal Madam, for a mind-blowing speech. Let us pray for the prosperity and unity of our country. This Republic Day, as we remember those who fought to give us the freedom, So now I call upon Ayush Pandey from Standard 10 to give a speech in English. A warm welcome to one and all present over here. Respected Principal Madam, Supervisor Madam, teachers and all my dear friends. Today we are here to celebrate the 72nd Republic Day of our country. Republic Day has a specific significance in the history of India. To make the event memorable, the national event is celebrated every year with great happiness and pride in our hearts. As we know, on 26 January, India got its independence. On 1950, the Indian Constitution came into effect, and from that day, we the people of India constantly praise the pride of our country as Republic Day of our country. We all know that India got independence on 15th August 1947, but the nation didn't have any constitution of its own. However, after many discussions and considerations, a committee headed by Dr. Babasaheb Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution which was adopted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January 1950. I want to end just by saying that India is a democratic country. The citizens live here and enjoy a privilege to elect their leader to the country. Although we have seen a lot of economic improvements and success as country, but we still have many hurdles in our path, such as poverty, unemployment, pollutions, and last 2 years of COVID pandemic. It is our duty as citizens to face the challenges and come out as a stronger in the other side so that everyone will become strong version of themselves and make our nation a good place. Thank you. Bharat Mata ki Jai. Jai Hind. Thank you, Ayush, for a fantastic speech. असंख्यांची केले सर्वस्व त्याग तुझ्यासाठी, असंख्यांची केले सर्वस्व त्याग तुझ्यासाठी, अनेकांनी केले बलिदान, अनेकांनी केले बलिदान, वंदन त्यांची करुणिया, वंदन त्यांची करुणिया, गाऊ भारत मातेचे गुणगान, गाऊ भारत मातेचे गुणगान. Now, I call Toshita from Standard 10 to give you more information about Republic Day in Marathi. नमस्कार, माझे नाव तोशिता गुडवे आहे आणि मी आता 10वीत शिकते. आज मी तुमच्या समोर 26 जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिन याबद्दल तुम्हाला माझे मनोगत सांगणार आहे. सर्वप्रथम सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज स्वतंत्र भारताचा 73वा प्रजासत्ताक दिवस आहे. त्यानिमित्त आपण सगळे इथे उपस्थित झालो आहोत. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताचे संविधान स्वीकारण्यात आले, परंतु 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे संविधान अंमलात आले आणि म्हणून भारत देश हा लोकशाही प्रजासत्ताक देश बनला. आणि म्हणून 26 जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. आता प्रजासत्ताक म्हणजे नेमके काय, तर याचा अर्थ असा की लोकांनी लोकांकरिता चालवित असणारा देश. प्रजासत्ताक देश असा देश असतो की त्या देशाचे मध्यबिंदू त्या देशातील लोक असतात. त्या देशावर कोणत्याही एका व्यक्तीचा किंवा घराण्याचं शासन नसतो. त्या देशाचे राष्ट्रप्रमुख किंवा पदक अधिकारी जनतेमधून निवडणुकीद्वारे निवडले जातात. नसे फक्त पुस्तक हा भारतीय धर्मग्रंथ, समृद्ध संविधान बनले शुद्ध पालक, गुलामगिरी संपली झाले गणराज्य, सत्ताधारी बनले चालक आणि जनता बनली मालक. आपण ही जी स्वतंत्रता अनुभवत आहोत ती आपल्याला अशी सहजासहजी भेटली नाही आहे. त्यामागे शेकडो वर्षाचा स्वतंत्रतेचा लढा आहे. अनेक स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या जीवाची आहुती दिली आहे. भगत सिंग, मंगल पांडे,
सुखदेव, राजगुरू, चंद्रशेखर आझाद अशा अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी या स्वतंत्र युद्धात आपल्या संसाराची राखरंगोळी केली आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताचे संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याद्वारे तयार करून स्वीकारण्यात आले. परंतु 26 जानेवारी 1930 मध्ये लाहोर येथे पार पडलेल्या अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू यांनी तिरंगा फडकवून संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली होती आणि म्हणून 26 जानेवारी हा दिवस राजघटनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवडण्यात आला. आजही आपले भारतीय जवान आपल्या देशाच्या सीमेवर आपल्या प्राणांची आहुती देत आहेत. आज आपण इथे सुरक्षित बसलो आहोत ते फक्त आणि फक्त आपल्या भारतीय जवानांमुळे. आजही भारतावर कोणत्याही प्रकारचे आक्रमण झाले, मग ते परकीय आक्रमण असो किंवा नैसर्गिक आपत्ती, यामध्ये सगळ्यात पहिले आपले भारतीय जवानच असतात. जिक्र जब असली हीरो का होता है, जिक्र जब असली हीरो का होता है, तो जुबां पर नाम देश के वीरों का होता है, तो जुबां पर नाम देश के वीरों का होता है. देशातील प्रत्येक जवानाला व त्याच्या कर्तृत्वाला माझे शतश नमन. या सर्वांमध्ये मला सगळ्यात जास्त आवडणारी गोष्ट ती म्हणजे शाळेमध्ये साजरा केलेला प्रजासत्ताक दिन. अगदी 2 दिवसापासून ही सगळी तयारी सुरू होते. कोणी तोरणे लावतं, तर कोणी रांगोळी काढतं, कोणी मैदानावर उभे राहण्यासाठी व्यवस्थित ओळी काढत असतात, कोणी आपल्या भाषणाची तयारी करत असतात, ज्यांचे नृत्य किंवा गीत गाणे असतात ते त्यांचा सराव करत असतात. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी सगळ्यात पहिले ध्वजारोहण होते, त्यानंतर राष्ट्रगान आणि प्रतिज्ञा म्हटली जाते आणि नंतर संविधानाचे वाचन होते. विद्यार्थी मित्र आपले भाषण, सामूहिक गीत गाणे व नृत्य यांचे सादरीकरण होते आणि नंतर गोड खाऊचा वाटप केला जातो. मला खात्री आहे की तुम्ही सगळ्यांनी हे अनुभवलंच असतील. अशा प्रकारे एकदम हर्षजल्लोषात भारताच्या कानाकोपऱ्यामध्ये हा प्रजासत्ताक दिवस साजरा केला जातो. आज या पावन दिवशी आपण मला आपल्या समोर माझे मनोगत सांगण्याची संधी दिली, याबद्दल मी तुमचे आभार मानते. माझे 2 शब्द तुम्ही शांतपूर्वक ऐकले, याबद्दलही मी तुमचे आभारी आहे. परत मी एकदा तुम्हा सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. Thank you, Toshita, for your wonderful speech. वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए. दिल एक है, जान एक है. हमारा हिंदुस्तान हमारी है शान, हमारा हिंदुस्तान हमारी है शान. So now I call upon Bhavesh Bhaviskar from Standard 6th to give a speech in Hindi. सुप्रभात. मेरा नाम भावेश अविनाश बाविस्कर है. मैं कक्षा 6ठी ड में पढ़ता हूँ. माननीय मुख्याध्यापिका, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है. याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है. हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है. हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है. आज हमारा भारत देश अपना गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है. यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ. आज़ादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं था. उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के अथक परिश्रम के बाद भारत का सशक्त संविधान तैयार किया गया. 1950 में भारत देश ने अपना संविधान लागू किया. उसी समय हमारा भारत देश सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ. हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है. इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है. हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की. उन सब शूरवीरों को आज हम दिल से याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम चैन की सांस ले रहे हैं. आज़ादी के सालों बाद आज भी हमारे देश के वीर जवान हथेली पर अपनी जान लेकर सीमा पर शत्रुओं का सामना कर रहे हैं. अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को वे सदा तैयार हैं. हम भारतवासी उनको सलाम करते हैं. गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है. 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था. बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में बहादुरी के लिए दिया जाता है.
गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती हैं। अपना गणतंत्र अपना संविधान है, भारतवासी होना हमारी शान है, भारतवासी होना हमारी शान है। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you, Bhavesh, for your fantastic information. So now I call upon Jasveer Singh Sahdev from Standard 7th D to give a speech in Punjabi. ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਅ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਤਿਰੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਦਾ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਕਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ। ਅਮਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ, ਸਾਖਰਤਾ, ਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਭੂਸ਼ਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 73ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੋਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। थैंक यू जसवीर फॉर योर वंडरफुल इंफॉर्मेशन। तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे। वादा करो इस देश को, वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे, दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। So now I call upon Gursimran Singh to say a speech in Punjabi. ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਿਕਾ, ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਲਾਡਲਾ ਵਤਨ ਮੇਰਾ ਗਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਵੇ। ਰਾਤੀ ਜਾਗਦਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦਾ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਦਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦਾ।
यारियां दा फर्ज निभावे हो। 26 जनवरी एक कौमी त्योहार है। 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤु 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1969 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹਰ ਵਾਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਫੜ ਲਈਏ ਕਰ ਦਈਏ ਠੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਫੜ ਲਈਏ ਕਰ ਦਈਏ ਠੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਭੰਨ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਵੇ ਪੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਭੰਨ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਵੇ ਪੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਡਦੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਡਦੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਾ नहीं। धन्यवाद। थैंक यू गुरसिमरन फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर उनको दिल झूमने लगा, देखकर उनको दिल झूमने लगा, सबके मन जिसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जिसे खिलखिलाने लगे। Now I request our guest to say a few words on this occasion. श्री गुरु सिंह सभा के प्रेसिडेंट सरदार हरबीर सिंह जी हेयर, मैनेजमेंट के तमाम स्टाफ की तरफ से प्रिंसिपल मैडम मारवाहा जी और हेड मिस्ट्रेस दीना नायर जी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देते हुए 2-4 लाइनों में कुछ बात कहूँगा कि जैसे अभी स्कूल बंद हैं बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो स्कूल आने का चार्म कुछ और रहता है। सुबह से सभी तैयार होना, बाकी प्रेस के हुए नए कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, शूज़ पहनना, खाना लेके टिफ़िन वगैरह पानी लेकर आना। लेकिन बच्चे क्या है, इन दिनों के इंतज़ार में सोचते हैं, उसके लिए 4 लाइनें कहता हूँ कि सफ़र से लौट आना चाहता है, सफ़र से लौट आना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, सफ़र से लौट आना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। और एक 4 लाइनें कहूँगा रिपब्लिक डे के उसमें, लेकिन एक्चुअली वो 4 लाइनें जो है ना किसी कविता की भूमिका के लिए कही जाती हैं, लेकिन कविता कहने के लिए इतना लंबा टाइम नहीं है, तो 4 लाइनें और कहता हूँ कि मरने से जो डर जाते हैं, मरने से जो डर जाते हैं उनको मृत्यु सताती है, मरने से जो डर जाते हैं उनको मृत्यु सताती है, वीर छेड़ते रहते उसको पर वह उनसे सकुचाती है, वीर छेड़ते रहते उसको पर वह उनको उससे सकुचाती है। चलो प्रिय अब देर करो मत, चलो प्रिय अब देर करो मत,
शत्रु तुम्हें ललकार रहा है, काटो माँ के बंधन देखो, हिमालय खड़ा पुकार रहा है, काटो माँ के बंधन देखो, हिमालय खड़ा पुकार रहा है। इसके आगे वैसे कविता आती है, लेकिन अभी कविता नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम कम है और सर्दी भी ज़्यादा है। इतना कह के मैं सबका धन्यवाद करते हुए समाप्ति करता हूँ। So, thank you, sir, for furnishing information to us. Job of feet is walking, but their hobby is dancing. Now, I call upon our secondary students to give a dance performance. रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद चांद मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। तुझ पे वारना सावर जान में, तुझ पे वारना सावर जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। हो सकते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। मन हर जाओ धन बरसाओ, धन सुखवारो जीरे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मरने वायो, नयो नयो सो रंग लगायो, शुभ दिन आयो मरने वायो, नयो नयो सो रंग लगायो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। Thank you everyone for an energetic and entertaining performance. A program is incomplete without the vote of time. So now I call Parth Shelkar from Standard 7th. सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रखना हमेशा इसका, सर ऊंचा रखना हमेशा इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। Good morning to one and all. Wish you a happy Republic Day. I am Parth Vinod Shelkar from Standard 7C. It's a great honor and privilege to propose a vote of thanks on this memorable and successful event. Let me first thank to our Almighty God to making this program
as resounding success. On behalf of our school, I would like to thank our chief guest for giving their valuable time for this occasion. I would also like to thank our management members for their presence and support. I would also like to thank our principal madam, supervisor madam, pre-primary and primary in charge, teachers and non-teaching staff for making this program successful. I would also like to thank our PTA members for their presence. Also like to thank our teachers for giving us the opportunity to perform in this program. I would also like to thank to each and every student, those who had participated in this program and given their best performances. At last, but not least, I would like to thank to everyone from the bottom of my heart. Thank you.